Students, in our previous lecture, we have read half of the chapter. It's chapter number 1, and today, inshallah, we'll finish this chapter. We'll read second half of the chapter. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun. वही का नज़ूल जो अगले 23 साल तक जारी रहा शुरू हो चुका था. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद और इत्तेहाद इंसानी का दावा करने के लिए उठ खड़े हुए थे. अराइजन उठ खड़े हुए थे, प्रोक्लेम दावा करने के लिए, कंटिन्यूड जारी रहा, डिवाइन मैसेज वही और रेवलेशन नज़ूल. His mission was to destroy the nexus of superstition. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. उनका मकसद तोहम, जहालत और कुफ्र के महवर को ख़त्म करना, ज़िंदगी का आला तसव्वुर कायम करना और ईमान की रोशनी और रूहानी सुरूर की तरफ इंसानियत की रहनुमाई करना था. मिशन, मकसद, नेक्सस महवर, डिस्ट्रॉय तबाह करना, सुपरस्टिशन तोहम, इग्नोरेंस जहालत, डिसबिलीफ कुफ्र, कंसेप्शन नोबल कंसेप्शन आला तसव्वुर और लीड रहनुमाई करना, लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी, डिवाइन ब्लिस रूहानी सरूर. उनका मकसद तोहम, जहालत और कुफ्र के महवर को ख़त्म करना, ज़िंदगी का आला तसव्वुर कायम करना और ईमान की रोशनी और रूहानी सरूर की तरफ इंसानियत की रहनुमाई करना था. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. चूँकि ये क़ीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था, अरब काफरों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया. माउंट बढ़ाना, प्रेशर, दबाव, थ्रेटनिंग, ख़तरा बन रहा था, डोमिनेंस गलबे के लिए. पेगन काफिर अरब They wanted them to renounce their cause. वो चाहते थे कि वो अपना मकसद छोड़ दें. And take to idol worshipping और बुतों की पूजा शुरू कर दें. On one occasion, एक मौके पर they sent a delegation to the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kind and caring uncle. एक मौके पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा. They told him to restrain the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम from preaching Allah Almighty's message और face their enmity. उन्होंने उन्हें कहा कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोकें या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें. फेस सामना करना, एनमिटी दुश्मनी. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिलेमा ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू. खुद को उलझन में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, सेंट फॉर बुलाया, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन और उन्हें तमाम सूरत हाल बताई. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम responded with these memorable words. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया. My dear uncle, मेरे प्यारे चचाजान, if they put the sun in my right hand, अगर वो मेरे दाएं हाथ में चाँद सूरज, and moon in my left और मेरे बाएं हाथ पर चाँद रख दें, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, तो भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत का दावा नहीं छोड़ूंगा. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. मैं ज़मीन पर सच्चा दीन कायम करूँगा या इसी कोशिश में अपनी जान दे दूँगा. The Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़्म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने ये जवाब दिया. इम्प्रेस्ड, मुतासिर हुए. डिटर्मिनेशन, अज़्म, फिर्म, पुख्ता. सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपनी राह चलो. नन विल डेयर टच दी, तुम्हें कोई भी छूने की जुर्रत नहीं करेगा. आई शैल नेवर फोरसेक दी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा.
And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنا تھا. Imbued with the divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. ہدایت ربی اور پختہ عزم سے معمور ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا شان اور وقار کے ساتھ کیا. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں عالموں میں ممکنہ حد تک بلندی عطا فرمائی. Here are some words and their sentences. Continued مطلب جاری رہا یا جاری رہی. The rain continued for many days. Threatening خطرہ دینا خطرہ بننا یا دھمکی دینا. The angry man is threatening everyone. Occasion موقع. We wear new clothes on the occasion of Eid. Enmity دشمنی. We always face enmity of India. Encounter سامنا کرنا. Ali encountered the thief with courage. یہ انڈیفینیٹ ٹینس ہے. اس میں پریزنٹ انڈیفینیٹ پاسٹ انڈیفینیٹ اور فیوچر انڈیفینیٹ کے سینٹینسز میں نے ملا کے رکھے ہیں تاکہ تینوں طرح کی آپ کی ریویژن ہو جائے. میں دھوپ میں چلوں گی. I shall walk in the sun. کیا تم نے کرکٹ کھیلی؟ Did you play cricket? وہ سچ بولتا ہے. He speaks the truth. گائے دودھ دے گی. The cow will give milk. اس نے سگریٹ نہیں پی. He did not smoke. ہم اپنا سبق یاد کرتے ہیں. We learn our lesson. وہ وردی نہیں پہنے گی. She will not wear uniform. کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ Does he offer prayer? ہوم ورک میں آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے. فی کنسیشن آپ کی سیب میں موجود ہے, میں آپ کو کروا چکی ہوں. اور یہ ریٹن ہوم ورک آپ نے فرائیڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.